morning to all of you. Today we're going to discuss the difference between polygenic inheritance and pleiotropy. In our previous lecture, we have discussed about polygenic inheritance and pleiotropy in detail. So, in order to know about both of these topics, uh, you need to watch my previous lecture on these two topics. Okay, so today we would discuss about the differences between polygenic inheritance and pleiotropy. So as you know, what is polygenic? One of the basic difference between polygenic inheritance and pleiotropy is polygenic means polygenes. When when many genes, more than two genes, control a single trait or character. And in case of pleiotropy, when the multiple effect of a gene, when a single gene controls many traits or characters or phenotypes. This is the basic difference between polygenic inheritance and pleiotropy. So let's discuss about the differences. The first major difference is in the polygenic inheritance. It is controlling of a single trait by multiple genes. Okay, so controlling of a single trait by multiple genes. Multiple genes, that's why this is known as polygene. Okay. In case of pleiotropy, as I have told you, that multiple effect of a gene, when a gene controls many traits, many characters, many phenotypes, or you can say the products of genes. So it is controlling of multiple traits by a single gene, and single gene controls multiple traits is known as pleiotropy. The next difference is, in case of polygenic inheritance, it has many genotypic outcomes that brings about genetic diversity. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल skin color in human beings. So you might have seen many different shades in the skin color of human beings. जैसे एक ही घर में, एक ही फैमिली में, अगर मान लीजिए अगर 5 लोग एक फैमिली में हैं, तो उन पांचों के पांचों पर्सन्स के जो स्किन कलर होगा, जो स्किन टोन रहेगी, वो डिफर करती है. So what is the reason? The reason behind this, many genes which are responsible for skin color, means many genes, they are controlling a single trait or character, that is skin color. Just because of that reason, it brings about genetic diversity. Okay, और हम लोगों ने इसके बारे में हमने क्रॉस भी किया था स्किन कलर के बारे में इन द लास्ट लेक्चर. Okay, then it has many genotypic outcomes, that means genetic diversity. But in case of pleiotropy, इसको नोट कर लीजिएगा, it has only 3 genotypic outcomes. रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसमें 4 जीनोटिपिक आउटकम्स की बात करी गई है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी तक इन्होंने 3 की बात करी है. तो ओनली 3 जीनोटिपिक आउटकम्स इन केस ऑफ प्लियोट्रोपी. These are G1, G2 and G3. These are the 3 different genes or genotypes, G1, G2 और G3. Simply इसको ऐसे याद करिए. These are the 3 different genes and they are responsible for 3 different phenotypes, P1, P2 and P3. Okay, तो यानी बात क्या करी है इसमें? मल्टीपल ट्रेट्स की बात करी है. मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल किया जा रहा है एक सिंगल जीन के द्वारा. जीन ये एक ही है, जी है, जी 1, 2 and 3. यही जीन क्या कर रहा है? ये फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ये. ठीक है. So, in case of pleiotropy, only 3 genotypic outcomes are there. Means these 3 genotypic outcomes, they are responsible for 3 different phenotypes. Okay, the next. This is a particular, in case of polygenic inheritance, this is a particular trait
where is a particular trait is influenced by many genes, जैसे कि उसमें कहा गया है इसकी डेफिनेशन में कि कंट्रोलिंग ऑफ अ सिंगल trait by multiple genes, that means पर्टिकुलर ट्रेट, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मान स्किन कलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी जीन्स, ओके, एंड you would wonder to know that there are more than 100 genes, there are more than 100 genes which are responsible for the skin color in human beings, okay. So, or you can say that there are more than 100 genes which are responsible for the formation of melanin pigment. So, on the basis of the development, on the basis of the formation of melanin pigment, skin tone varies. Okay. Then, in case of pleiotropy, a particular trait is influenced by only one gene. Okay. Effect, और इसमें क्या है? In case of pleiotropy, effect on trait is 100%. यानी like in case of हमने एग्जाम्पल क्या लिया था इसमें, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोलूरिया है, one defective gene would lead us a permanent defect. जैसे हमने अब क्या पढ़ा था उसमें जीन के बारे में, एक जीन जो है जो कि एक एंजाइम को नहीं बनने दे रहा, इसकी वजह से जो फिनाइलिन जो अमाइनो एसिड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन फिनाइलिन अमाइनो एसिड वुड कन्वर्ट इनटू ओके फिनाइल पाइरुवेट whose accumulation leads to genetic defect that is known as phenylketonuria, brain damage और mental retardation. So उसमें क्या बात हो रही है, इफेक्ट इज 100%, जीन डिफेक्टिव हुआ तो प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव आएगा, और अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएगा तो आगे डेवलपमेंट भी डिफेक्टिव ही होगी. तो बात हो रही है इफेक्ट इज 100% इन केस ऑफ प्लियोट्रोपिक आउटकम्स, बट इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम रहेगा. ओके, देयर इज इंप्रेशन बट very slight impression is there in case of polygenic inheritance. This follows non-Mendelian inheritance pattern. ये Mendelian inheritance pattern को follow नहीं करता, but this pleiotropy follows Mendelian inheritance pattern. This is highly affected by environmental factors. Polygenic inheritance or these genes are highly affected by environmental factors. This is skin color. Skin color of the human beings who are living on equatorial region, subpolar region, polar region, subtropical regions, तो उनमें जो स्किन कलर है वो वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन की. ठीक है, तो सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. यानी जेनेटिकल बिहेवियर इसमें चेंज होता रहता है, वेरी करता है प्रेजेंट environmental conditions के according in order to survive or better adaptations. But this is not affected by environmental factors. यहाँ सीधी बात हो रही है, if gene is defected, the product would be defected. If the product would be defected, there is defected development. For example, it controls or the genes or these polygenes controls the height, weight, body shape, eye color, skin color and hair color, etc. And these, in case of pleiotropy, albinism, phenylketonuria, autism, sickle cell anemia. So, permanent effects, they may vary person to person. Okay. And in case of epistasis and hypostasis, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में लास्ट लेक्चर में. So what is epistasis and what is hypostasis? When a genes, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्रोमोसोम, हमने कल ऐसे बताया था, ये जीन्स है, ये क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम के ऊपर there are some genes, group of genes. यहाँ बैठे हैं, जैसे मान लीजिए one group of gene and second group of gene यहाँ बैठा हुआ है. If this group of gene masks over this group of gene, or you can say the first group of genes
masks over or suppresses the activity of second group of genes. That is known as epistasis. And the genes which are masking over this pair of gene, these genes are known as epistatic genes. यानी जो दूसरे जीन्स को मास्क ओवर कर रहे हैं, जो दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशंस को रोक रहे हैं, दबा रहे हैं, सुप्रेस कर रहे हैं, हम उन जीन्स को क्या बोल देंगे? एपिस्टैटिक जीन्स। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस। जो मास्क ओवर हो रहे हैं, जो कि सुप्रेस हो रहे हैं, जो कि अपनी एक्टिविटी को उनको रोकना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एपिस्टैटिक जीन्स, हम इस पेयर ऑफ जीन को क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन्स एंड द प्रोसेस इज हाइपोस्टेसिस. Okay, so they are being suppressed by these epistatic genes. Okay, ये इसके बारे में सिंपली है, ग्रुप ऑफ जीन्स मास्क ओवर और suppress the activity of or expression of another group of genes. ये सिंपल सी क्या बात है. And the genes which mask over another genes, they are known as epistatic genes, the process named epistasis. And the genes which get masked over by epistatic genes, the second pair of gene, they are known as hypostatic genes, and the process of the suppression is known as hypostasis. So today we have learned about polygenic inheritance and pleiotropy, the difference between both of these genetical outcomes, and epistasis and hypostasis, how a pair of genes masks over another pair of genes, suppresses the activity of another pair of genes. So this is all about the gene interactions, their outcomes, their suppression, their dominancy. So इन differences को आप अच्छे से याद कीजिएगा. And tomorrow we would discuss about chromosomal theory of inheritance. Thank you.